हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम डॉक्टर अभिषेक, बैक विद अनदर वीडियो। सो आज का टॉपिक होगा बहुत ही इंटरेस्टिंग। तो आज का टॉपिक ये है कि शैल वी एलिवेट अ फ्लैप बिफोर एक्सट्रैक्शन और नॉट। तो आप लोग आपके अपने मन में सोच रहे होंगे कि यू मस्ट बी थिंकिंग लाइक फ्लैप निकालना तो हमेशा कंपलसरी होता है, पर सर इसका वीडियो क्यों बना रहे हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल फ्यू थिंग्स। सो बिफोर डूइंग एनी सर्जिकल एक्सट्रैक्शन और एनी सर्जरी और एनी टूथ रिमूवल, what we do is we give local anesthesia, we give injections। जैसे भी लोअर टूथ के लिए आप ब्लॉक देते हैं, प्रीमोलर के लिए मेल्टन नर्व ब्लॉक देते हैं, एंड PSA एंड एवरीथिंग, वॉट एवर टूथ एक्सट्रैक्शन यू डू। सो ऑलवेज बिफोर जस्ट डूइंग द एक्सट्रैक्शन यू टेक आउट योर एलिवेटर, पेरियोस्टल एलिवेटर एंड द फोर्सेप्स। तो ये काफी मुझे क्वेश्चंस आए कि सर टूथ मोबिलिटी में फ्लैप एलिवेट करना जरूरत है। एक्चुअली फ्लैप आप तभी एलिवेट करें अगर जिंजेवा का जो अटैचमेंट है लूज ना हो। तो फ्लैप से हम क्या करते हैं, बेसिकली हम एक स्पेस बनाते हैं जहां की आपका जो फोर्सेप है वहां पे आपके CJ के बिलो वहां तक जा सके। दैट इज द मेन आइडिया ऑफ एलिवेटिंग अ फ्लैप। अब मैंने बहुत लोगों को, ऐसे स्टूडेंट्स को भी देखा है कि टोटल जिंजाइवल रिसेशन इज देयर एंड स्टिल दे आर एलिवेटिंग द फ्लैप, विच इज नॉट रिक्वायर्ड ऑलवेज, राइट। ग्रेड 3 मोबाइल है, ग्रेड 2 मोबाइल है, ग्रेड 1 फिर भी फ्लैप एलिवेट कर रहे हैं। अगर ग्रेड 1 मोबिलिटी है तो जिंजर ऑन द टूथ इज लूज, सो आप डायरेक्टली उस फोर्सेप को, अगर आप लोअर मोलर निकाल रहे हैं तो डायरेक्टली द फोर्सेप यू आर जस्ट इंसर्टिंग इन बिलो द CJ लेवल एंड एक्सट्रैक्टिंग द टूथ। सो दिस इज अ वेरी सिंपल फंडा। लाइक जितने ज्यादा आप इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे द चांसेस ऑफ इन्फेक्शन विल बी हायर। एंड सपोज देयर इज अ फर्म टूथ एंड यू डोंट एलिवेट द फ्लैप, so what happened is, like, while doing the extraction your forceps will impinge on the lingual gingiva or the buccal gingiva, and while extraction you're not able to see that much clearly as while doing RCT or doing scaling, right? एक्सट्रैक्शन के टाइम में आपको क्या ध्यान रहता है कि मुझे दांत निकालना है और कोई भी फोकस नहीं रहता है, राइट? So whenever doing the extraction we are putting force and patient head is moving, your hand is also moving, right? So at that time we are not having that much concentration about the gingiva, right? And after the extraction, if your forceps is impinging on the lingual gingiva of a lower molar tooth, the side gingiva of the lingual gingiva of the second molar or the third molar will get tear off, and patient will have excruciating pain after 1 day. Not because of the extraction. Patient will tell you, sir, दांत निकाला इतना दर्द हो रहा है. That because of the tearing of the gingiva if you don't elevate the flap. So elevate the flap if the tooth is normal, carious tooth, and if there is no gingival incision, then just elevate the flap and you have to do it quickly. ऐसा नहीं कि आप कर रहे हैं तो कर ही रहे हैं and patient will have problem with that. There will be bleeding, then you will clear the bleeding again. Then तो elevation जो है जल्दी करना चाहिए and do the extraction immediately after that. ऐसा नहीं कि आप elevate कर ही रहे हैं, 15-20 मिनट लग गए आपको elevate करने में। अच्छा, काफी लोग मुझे ये पूछते हैं कि सर फ्लैप एलिवेशन जरूरत है कि रूट स्टम्प निकालने के लिए? देखिए, when a tooth is in root stump stage, right, already the attachment is there. Whatever the attachment, periodontal attachment is already weak. The periodontal ligament is already widened. So you won't get much benefit from just elevating the flap in a root stump, right? You just need to create some space just attached to the tooth, and then थोड़ा सा space बनने के बाद you can use your periosteal elevator to extract the tooth itself. Or you can use a curved Warwick-James elevator to extract the tooth. So this is the very common thing which I have seen, and always change your elevator after every 6 months to 7 months because it becomes blunt, and you should always have 3 to 4 periosteal elevators in your clinic. One more elevator is there which is known as periotome. So before placing an implant, if you want to do atraumatic extraction of the tooth, so उस periotome को आप periotome से elevate करके जो periodontal ligament है, so you excise it and then you can extract the tooth without traumatizing the bone and the periodontal ligament space. So this is something else which I'll tell I'll make a video, separate video. And right now one more message I wanted to give you in this video कि we Indians अगर मैं सच बोलूं काफी ignorant होते हैं regarding any kind of disease, और हमको कोई भी जैसे आपको problem होती है तो we have a hesitation to show to the doctor at the very first. First we try home remedies, first you try different antibiotics from the over the counter drugs. लेकिन talking about the pandemic,
दिस कोरोना वायरस, मेनी पीपल आर लाइक इन इंडिया में तो नहीं होगा, टेम्परेचर हाई है, लो है, ऐसा कुछ भी नहीं है, कभी भी कैसे भी हो सकता है। ऑलरेडी यहाँ पे 75 केसेस हो गए हैं, तो प्रिकॉशंस आपको पता ही हैं, सारे फॉलो करिए एंड इग्नोरेंट मत रहिए। यू आर द डेंटिस्ट, हम डेंटिस्ट है, वी आर मोर प्रोन बिकॉज वी एज प्रोफेशन आर क्लोजेस्ट टू अ पेशेंट माउथ, राइट। 1 फीट का भी डिस्टेंस नहीं होता है पेशेंट के और हमारे बीच में। तो बी केयरफुल, change your mask every time you do a patient and be very careful while working on the patient right now because the disease तो 2% mortality rate है, लेकिन mortality rate है ना, तो फिर भी be careful and don't travel unnecessarily, जोश दिखा के 1 महीने बाद चले जाना जब सब ठीक हो जाएगा। तो यही आज का मेरा मैसेज था और यही वीडियो था। तो अगर कुछ क्वेरी है तो यू कैन आस्क मी इन साइड डेंटल व्लॉग्स एंड इन Instagram। टेक केयर, लव यू ऑल।